तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता है नवीन ठाकुर आपका केपीएल एक्सपीडिशंस में। तो फ्रेंड, जो आज की वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और खासकर उन लोगों को जो सोलांग वैली तक आए बट उसके बाद नहीं दिया गया जाने। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए कि भाई हमने सोलांग वैली के आगे मीन्स अटल टनल तक देखना है कि कैसा लग रहा है स्नो में ये रास्ता। तो गर्मियों में काफ़ी लोग आए होंगे, सर्दियों में भी आए होंगे, अभी कईयों ने देखा होगा स्नोफॉल में ये एरिया और कईयों ने नहीं देखा होगा। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने ये वाला एरिया नहीं देखा है, सोलांग वैली टू अटल टनल इन विंटर्स की चारों तरफ जब स्नो पड़ी रहती है तो ये कितना खूबसूरत लगता है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ मैं सोलांग वैली से अटल टनल तक का जो खूबसूरत सफ़र है वो वाला। अभी पुलिस वालों ने बैरिकेड हटाए हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रूल्स हैं, चेकिंग के बाद ही छोड़ा जाएगा। तो वो आने वाली जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं पूरी डिटेल में बताऊँगा। तो तब तक लीजिए आप सोलांग वैली से अटल टनल की राइड का खूबसूरत नज़ारों का मज़ा।
तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सफ़र सोलांग वैली से लेकर अटल टनल का। तो रोड के दोनों तरफ स्नो ही स्नो, इतनी ज़्यादा स्नो की क्या बताऊं। और दूसरी बात, रोड के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ब्लैक आइस जमी थी। तो फ्रेंड्स जो आज की वीडियो थी ये अटल टनल तक ही थी। जो आएंगी आगे, जो लाहौल का सफ़र होगा, पूरे व्लॉग आएंगे, वो कल से आएंगे, तो ज़रूर उन वीडियोज़ को भी देखना। तो बस फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।